गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. A warm and pleasant good morning to one and all present over here. Honorable Principal, Reverend Sister Linnea, Honorable Local Manager, Reverend Mother Archana, Honorable Vigilant Principal, Reverend Sister Raphael, Vice Principal, Reverend Sister Cincy, respected teachers and all my dear friends. Hope you all are fine. Hi, myself Mrudula. Hello, I am Mansi. They guide us, they support us, they inspire us, they teach us. Today is a day to thank them and say Happy Teachers Day to all respected teachers. Teaching is the most influential job in the world. Teachers are known to the shape of the mind of youth, and without knowledge, no one can exist in this world. Yes, you are right, Mrudula. Teacher imparts good value in children and turn them into responsible citizens. So almost every country celebrates Teachers Day. Do you know, Mrudula, why do we celebrate Teachers Day? Yeah, of course I know. We celebrate this day on the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a man of many good qualities and a favorite teacher among the all students. Yes, you are right. We celebrate Teachers Day because teachers have been the architect of society. And without them, no society can walk in the path of progression. Pray for our blessings with all humility. Give us wisdom to make this world a better place. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as tribute to goddess of knowledge. Myself Rajlakshmi Rakesh Patil from Standard 9th A. To all my dear teachers, your dedications, patience and allowed me to pursue my ambitions in life. I wish Happy Teachers Day to all my dear teachers. First of all, Shivaji Borse from Standard 1st is going to wish teachers in Malayalam language. Good morning everyone. ജീവിതത്തിൽ ഒരു അറിവും നിസാരമല്ല. അറിവിന്റെ പാതയിൽ ഉന്നതമായി നടന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ നയിച്ച അറിവിന്റെ ലോകം തുറന്നു തന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഒരായിരം ആശംസകൾ. Thank you, Shivaji. Nice wishing in Malayalam language.
Indeed, teaching is very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. A teacher affects eternity and brings out the best in a student. In the honor of our respected teachers, we would like to introduce Kalash Patil, who is going to talk about Teachers' Day. Morning to all the teachers and my dear friends. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teachers. Today we celebrate Teachers' Day, a day kept aside for the gifted souls who works every day to make sure that the future is bright for all of us. Let us welcome all the teachers with a big round of applause. On this beautiful occasion, let us take an opportunity to convey our wishes to all the teachers who have given impeccable contribution in shaping us. Every year, 5th of September, we celebrate Teachers' Day. It is a day filled with joy and happiness, as students are eagerly looking forward to tell their teachers how and why they are special to them. It is my honor to talk about our dear teachers on this wonderful occasion. 5th of September is marked as the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishna, and Teachers' Day is celebrated in commemoration of his birthday. Along with being a successful leader, Dr. Sarvapalli Radhakrishna was a great scholar and excellent teacher. Teachers are backbones of our society. They are source of knowledge. From them leads the ideas and thoughts. One day, one of us will use to provide back into society. I extend my gratitude towards all the teachers who give the selfless service and give the dynamic support. Guru Govind do khade कागे लागो पाय बलिहरि गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए. Thank you for listening my speech and have a nice day. Thank you, Kalash. We appreciate for your thoughts. We dance for laughter, we dance for tears. We dance for madness, we dance for fears. We dance for hopes, we dance for screams. We are the dancers and we create the dreams. So let's welcome 8 Sanal girls for the dance performance. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै
Thank you, girls. It was a fabulous performance. A student is inspired by his teacher every time. Such as students who are inspired by teachers are going to show a role of teachers. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। अरे टीचर कहाँ है? मुझे क्या पता, ढूंढ के लाना। तू सिंसियर है, तू जाना। ओ सॉरी सर। It's okay. Good morning. Sit down. Thank you sir. Now give your attendance. Savai. Jen. प्रेजेंट सर। Ritik. Present, sir. Sandeep. प्रेजेंट सर। Divanshu. प्रेजेंट मैम, सॉरी सर। Okay, बच्चा. These mistakes happen. Now submit your projects. अरे यार, मिल जाएगा। Wow. Very good. This is excellent. What is this, Divanshu? Again mistake. सॉरी सर। Class! Class! This is what you do in the absence of teacher. Disgusting class. I won't teach you. Shameless fellows. अरे ये तो फ्री पीरियड है। तड़ी तड़ी अपनी ऐसी है कि टुक टुक सारे देखेंगे, वो बड़ी बड़ी आंखें खोलेंगे, जी मामा हमको बोलेंगे। यार है अपने फेवर में, घूमे है फिर तो तेवर में, चंगी सारियां अपनी यारियां है फॉरएवर होए। पटियोले सानू पहले कहंदे, असि कहंदे कहंदे, इन शाइनिंग शाइनिंग फ्यूचर साडा ब्राइट सी। Morning. Now move to the chemistry lab. Students, be careful. Don't mix sodium with भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी
अरे अरे चुप हो जाओ, ये तो इंग्लिश का पीरियड है। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखूं वीखूं नई जुबान। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखूं वीखूं नई जुबान। के दरवाजे को खोलो, टटोलो कोई रिश्ता नया। लम्हा ज़ुबाने वो खोलो, ये हो स्वाद जिसका नया। बढ़ने दो यारी का सर्कल जरा, हैप्पी हैप्पी सा हो हर पल जरा। बढ़ने दो यारी का सर्कल जरा, हैप्पी हैप्पी सा हो हर पल जरा। अकेले हैं थोड़े से कम, यारों से बने हम, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। अरे अरे आज तो बास्केटबॉल खेलेंगे। नहीं वॉलीबॉल। हम तो क्रिकेट से ही काम चलाएंगे। नहीं फुटबॉल खेलेंगे। अरे अपन तो वॉलीबॉल खेलेंगे, तुम मेरी टीम में रहना। मैं तो फुटबॉल में इंटरेस्टेड हूँ, आई विल नॉट प्ले। अरे चलो 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 चलो। Wait. We are not going to ground due to heavy rain and your exams are coming near. Better study. छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो। बहुत हो गई मस्ती यार। Now we want to tell the teachers that we have genuine feelings for them. चले तो राहबर बने वही, वो मेरे टीचर थे तुम्हें। हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। We wish you a very happy day. हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। Thank you, students. It was an awesome performance. To fill us with the joy, again the next performance is dance. Now I would like to invite Miss Anvesha Purani for our next performance. हाँ जिसने भी कर दिया आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वही। हाँ जिसने भी कर दिया आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वही। वो मेरे टीचर थे तुम्ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम्ही। वो मेरे टीचर थे तुम्ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम्ही। Thank you, Anvesha. It was a delightful performance. A teacher always helps you to gain knowledge, and whenever you have a problem, he or she stands beside you to help you. Yes, Mansi, that's absolutely true. Now Rituja Patil is going to give a speech. Good morning to the respected teachers and my dear friends. Today we are here to celebrate the occasion of Teachers Day. Myself, Rituja Prashant Patil from class 5th. Teachers Day is celebrated on 12th September every year. This day gives us the opportunity to celebrate and to express our gratitude to our teachers. 12th September is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was a great scholar and teacher. He was also the second president of India. Students must respect to their teachers, who are undoubtedly the backbone of our society. There is also a saying that teachers also play a role of parents. Parents give birth to a child, whereas teachers mold that child's personality and provide a bright future. Apart from education,
work at every step to become a better people. Teachers are there for a blessing for us in many ways. That's why we should always respect our teachers and follow their advice to be worthy citizens. At last, I wanted to say, true teachers are those who help us think for ourselves. Thank you. Thank you, students. Now I would like to call Vanshika Punjabi for our next performance. Nowadays, due to this pandemic, we are suffering lots of problem in online studies. So, based on this theme, the students of standard 4th, 7th, 8th and 10th are going to perform a online drama. Oh no, सियान की क्लास का टाइम हो गया है। सियान उठो बेटा उठो, तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया है। नहीं बेटा उठो उठो, क्लास का टाइम हो गया है, मैम आने वाली होगी। ये लो बेटा क्लास का टाइम हो गया है, मैम आ गई, देखो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। सियान तेरी मॉर्निंग क्लास शुरू हो गई क्या? मम्मा आपने इसके तो कपड़े भी नहीं बदले। भगवान मैंने तो इसके कपड़े नहीं बदले। चल कैमरा ऑफ कर और खड़ा हो जा, इसके ऊपर ही पहन ले, किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चों मैं दिख रही हूँ अब, ठीक है? डोंट क्लास। सॉरी मैम। अपनी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? मैम वो ना मेरी पुरानी शर्ट फट गई तो मैं यूनिफॉर्म शॉप से नहीं मंगा लूंगी, पर अब तो वो बंद है ना, मंगा लूंगी जल्दी। तो बच्चों क्लास शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपने साइड से माइक्रोफोन म्यूट कर दें। सिट स्ट्रेट। ओके मैम। तुमने अपना वीडियो क्यों ऑफ किया? वीडियो और ऑडियो ऑन करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। यस मैम। इतनी देर क्यों लग रही है? यस मैम। अनन्या तुम्हारे फेस पे क्या लगा है? मेरे फेस पे क्या लगा है मैम? मम्मी जल्दी कुछ करो ना। बेटा मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अगर 2 बजे तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो मैम मुझे 0 मार्क्स दे देगी। ओ नो, इंटरनेट भी चला गया। क्या हुआ बेटा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ पापा जी, मैं अपना असाइनमेंट सबमिट ही कर रही थी पर उतने में नेट ही चला गया। अब मैम मुझे 0 मार्क्स दे देगी। बता के देखो टीचर को, क्या पता अब ले लो आपकी असाइनमेंट। मैम को बोला, मैम ने सोचा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ओफो यार, ये ऑनलाइन क्लास को बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन कर रही है। सच में कभी इंटरनेट चला जाता है और कभी समझता ही नहीं सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करे। अभी मैं सफाई करने जा रही हूँ। तुम्हारे पीछे कौन साफ सफाई कर रहा है? उनको बोलो थोड़ी देर में आई। मैम वो ना मेरी मम्मी थी। तुम्हारे पीछे कौन गाना गा रहा है? मैम वो ना मेरे पापा थे। क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। मैम ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। तुझे पता है कल वाले सरप्राइज टेस्ट में तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे तो लगता है मैम मुझे 0 मार्क्स दे देगी।
क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये कितने अच्छे आइडिया है। अगली बार से मैं यही करूंगी। देखो जा। तुझे पता है कल वाले सरप्राइज टेस्ट में तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे तो लगता है मैम मुझे 0 मार्क्स दे देगी। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये कितने अच्छे आइडिया है। अगली बार से मैं यही करूंगी। देखो जा। सोचना भी मत। कल हो सकता है कि मैम भागा ले ले। मुझे इस बार क्लास में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं तो मैं इस बार पहले से प्रिपेयर कर लूंगी। अब मैंने सारे आंसर्स लिख लिए। सियान, आप चलो मेरे साथ। आप सिर्फ चलो मेरे साथ। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैम मेरा ऑनलाइन टेस्ट लेना चालू करेगी तब आप मेरी कॉपी ऐसे पकड़ के यहाँ पे। ठीक है। आप टेस्ट के लिए रेडी हो? यस मैम, बिल्कुल रेडी हूँ। बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब? इधर उधर क्या देख रही हो? मैम मैं ना वो सोच रही हूँ। मैम याद आ गया, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। और राजस्थान की? अरे मैंने ये आंसर तो उठा ही नहीं। मैंने कहाँ से पूछ लिया। और हरियाणा की? मैम क्लास इज ओवर। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी। Due to this pandemic, we have to do online lectures. Teachers are trying hard to teach us. So let us participate in their hardship and create a better future. Thank you. Thank you, friends. Dance is the joy of movement and heart of life. Now, hold your breath and welcome Disha Rio from Standard First for her dance. Words make you think a thought. Music makes you feel a feeling. And a song makes you feel a thought. So Parul Patil from Standard 7B is going to explain her feelings through song. So let us welcome. छोटे छोटे पाँव से चला जो स्कूल की तरफ, तो क्या बताऊं क्या क्या देखा वहाँ। खड़ा था कोई बाहों को फैलाए और प्यार से कहा कि बेटा आ जाओ यहाँ। तो छोड़ मम्मी का हाथ, चला मैं उनके साथ और पीछे मुड़ के बाय कह दिया। इस तरह चैप्टर 1 शुरू किया। उल्टे सीधे टेढ़े में
पास। चुप्पी में भी सुन लेते थे, आँखों को पढ़ते थे, हाँ जान लेते मेरे दिल की बात। मैं छुप छुपा के करता रहता था शरारतें, मगर वो जेम्स बॉन्ड के जैसे मुझे ढूंढ लेते। फिर सजा के तौर पर कठिन सा कोई एक सवाल खड़ा वो मुझको करके झट से पूछ लेते। फिर भी छोड़ मम्मी का हाथ, चला मैं उनके साथ। जादू सा था कुछ उन्होंने किया, मैंने खुद को जैसे सौंप ही दिया। पहली डांट जब पड़ी तो थोड़ा मैं सहम गया, सोचने लगा ये आखिर कैसे और क्यों हुआ। इतने में वो मुस्कुरा के बोले, देखो बेटा जी ये पहली गलती, माफ ना दोबारा होने देना जी। सर झुका के मैंने भी सॉरी झट से कह दिया, फिर भी सौ गलतियों को बार बार था किया। गिर पड़ा मैं जब भी तो सहारा झट से दे दिया, धीरे धीरे पंख लगे तो आसमां भी दे दिया। मैं छोड़ मम्मी का हाथ, चला था उनके साथ, है थैंक यू कहने की बारी आज। ओ टीचर तुम हो मेरे सर का ताज, ओ टीचर तुम हो मेरे सर का ताज। छोटे छोटे पाँव से चला जो स्कूल की तरफ, तो क्या बताऊं क्या क्या देखा वहाँ। खड़ा था कोई बाहों को फैलाए और प्यार से कहा कि बेटा जा। Teachers Day. As today is Teachers Day, I want to say thank you to all of my respected teachers for teaching us, inspiring as well as motivating us to move forward. Happy Teachers Day. Without you, we will have been lost. Thank you, teacher, for guiding us, inspiring us, and making us what we are today. Happy Teacher Day. Thank you. We celebrate Teachers Day on 5th September because Sarvapalli Radhakrishna's birthday. Happy Teachers Day. Thank you. Guru Brahma, Guru Vishnu,
One child, one teacher can change the world. Thanks for teaching us in this pandemic situation using technology, that is online classes, without break. Teacher, you are the reason behind 1,000 smiles. Thank you. Have a nice day. Teachers encourage minds to think, hands to create, and heart to love. Now our teachers, they will share their own experience by writing a letter to them. Hello everyone, I'm Executive Deepika. Hi, cheerful me. Hey, me, ambitious Pallavi. Hey, me, passionate Pratima. Sitting here on this chair, I'm thinking of tomorrow, my birthday as a teacher. I feel as nervous and excited both at the same time, as I did as a kid on my first day of school. I'm feeling anxious and excited both at the same time. You are now moving over the other side, the side you never imagined yourself. How a person can be happy, excited, anxious, and nervous all at the same time. I'm excited, I'm feeling proud, a great sense of responsibility. So, it's all the more important to be your natural self. I promise to myself. In this capacity, I wear different hats. I am also a mother, a counselor, a guru, a mentor, a confidant, and an entertainer. Will I be a good teacher? Will my learners accept me? Will they enjoy my company and all the learnings I bring to the class? They are going to be the change maker of the world, and I will be helping them in the beginning of the journey. To be more special, they are going to meet me for the first time. Everybody remembers that one teacher in their schooling life will impact them. I want to be that one teacher for my children. Yes, this faith, this passion will take you where you need to be. So I promised myself to do a conscious effort to love them unconditionally and be an important part of their life. But make sure to focus on the big reward waiting for you. In the end, a warm hug, a smile, and our moment with your little learners. May just one teacher in his life who made a difference, and I want to be that teacher. Thank you. Teaching is like a mirror. A teacher's purpose is not to create students in his own image, but to develop students who create their own image. I want to make difference in each child's life. Thank you. Good luck. Go ahead and have fun because you are getting to be a child again. What a teacher is more important than what he or she teaches. I'm not a teacher, I'm an awakener. I will update you of my day soon. Thank you. Thank you. Really, thank you teachers for sharing your own experience. Teachers are only the people who nod their slips over other people's children. We are very thankful to all respected teachers. Now I would like to call Ms. Prerna Patil for vote of thanks. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Good morning to one and all present here, respected principal sister, teachers and all my dear friends. I am Prerna Patil from 8th A. Today it's my great privilege to express vote of thanks on the special occasion of Teachers' Day. Our first thank goes out for our lovely and respected principal, Reverend Sister Linia, who is the source of all inspiration and who has always guided us. We take immense pleasure in thanking our Vice Principal, Reverend Sister Cincy, for her constant guidance all throughout the program. Our next heartfelt thanks goes out for our teachers, who are our second parents, who always guide us, lead us and motivate us. I express my gratitude
for our non-teaching staff for their cooperation and support. And next thank goes out for our twinkling stars of St. Mary. Dear students, you are the source of success behind every program. I express my gratitude to the parents for their support to the school. Last but not the least, I thank all my cabinet members for their hard work and support. Thank you for giving me an opportunity to express vote of thanks on the special occasion of Teachers' Day. Thank you and have a beautiful day.